Everyone, today I am going to discuss some examples of polynomial. Very first is find all the zeros of this one polynomial if two of its zeros are root 2 and minus root 2. Very first, let it say p of x. Let it polynomial p of x. We have to find its two zeros if two of its zeros are given to us. Let us clear it by taking example of numbers. If I have 16, we know that the factorization of 16 is 2 into 2 into 2 into 2. 16 has 4 factors, 2 into 2 into 2 into 2. अगर हमें ये कहा जाता है कि इसके कोई भी दो फैक्टर हमें दे दिए, एक 2 है दूसरा भी 2 है, हमें रिमेनिंग 2 फैक्टर्स को फाइंड आउट करना होता है. रिमेनिंग 2 फैक्टर्स को फाइंड आउट करने का वे क्या होता है कि जो भी हमें फैक्टर्स दे रखे पहले उनकी मल्टीप्लिकेशन कर दो. हमें 2 फैक्टर्स दे रखे थे तो 2 इंटू 2 4. हम क्या किया हमने कि 16 को 4 से डिवाइड कर दो. क्वेश्चन क्या आ गया 4. अब जो क्वेश्चन आया उसको भी फैक्टर कर दो. क्या फैक्टर आ गया 2 इंटू 2, यानी जो 16 के रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे 2 इंटू 2 होंगे. लाइकवाइज इस पोलिनोमियल के हमें दो फैक्टर्स दो जीरोस दे रखे हैं रूट 2 एंड माइनस रूट 2. हमें रिमेनिंग 2 जीरोस को फाइंड आउट करना है. अगर ये हमारे पास जीरोस है दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 2, एक्स इज इक्वल प्लस रूट 2 एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 2 आर द टू जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल. और वी कैन से अगर हम इस प्लस रूट 2 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो क्या आएगा ये एक्स माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0. ये एक्स माइनस रूट 2 और एक्स प्लस रूट 2 क्या है फैक्टर्स है इस गिवन पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स के. अगर ये दोनों ही फैक्टर हैं, दोनों के अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते तब भी ये फैक्टर होगा, ऑफ कोर्स होगा. दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 होल स्क्वायर बिकॉज इट इज़ ए माइनस बी ए प्लस बी. हमने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. क्या रहा है यहाँ से एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल आउट, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स. अगर ये फैक्टर है इसका मतलब क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2 विल डिवाइड पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स और वी कैन से पी एक्स विल बी डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2. अगर इसे डिवाइड करता है इसका मीनिंग क्या होगा कि रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास 0. नाउ अब हम डिवीज़न देखते हैं. अगर हम पी एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या क्वेश्चन होगा. डिवीज़न का हमें रूल पता है कि सबसे पहले हम डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं. जब हम 2x² को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट 2x स्क्वायर, राइट. 2x स्क्वायर एज अ क्वेश्चन. फिर उसके बाद जो 2x स्क्वायर है उसे हम डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हैं. जब हम 2x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 2x4 एंड माइनस 4x स्क्वायर and we will write 4x square in the below of 3x square because these are the like term. After that change the sign, this one cancel out with this one and carry terms, collect the remaining terms. Here it is minus 3x cube, it is minus 3x square plus 4x square plus minus minus, and while subtraction we always put the sign of bigger term, then it will be plus x square and carry the remaining terms. Next step is divide the first term of the new dividend with the first term of the divisor. Here new dividend is minus 3x cube. Then we will divide minus 3x cube by x square. Then we get minus 3x. Write minus 3x as the second term of the quotient and multiply the divisor with minus 3x. Here we get minus 3x cube and minus minus plus 6x. Write 6x below of the 6x. Now next step is to change the sign. This one cancel out with this one cancel out with this one. We are left with x square minus 2. Again here the new dividend is x square minus 2. Divide the first term of the dividend with the first term of the divisor. Then we get plus 1. Write the plus 1 as a third term of the quotient and multiply the divisor with plus 1. We have here plus x square minus 2. Then next term is to change the sign. After changing the sign we get here 0. The remainder in this case is 0. We know that when remainder is 0 then we can say dividend is a multiple of divisor or divisor is a factor of dividend. Okay, here
apply the division algorithm. We have dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Dividend is here p of x, divisor is here x square minus 2, and quotient we get here 2x square minus 3x plus 1, and remainder is here 0. We have to find the remaining two zeros. To find the remaining zeros, we will solve this quotient. This quotient is quadratic in x square, in x, so we will find its zero by splitting the middle term method. Here, by splitting the middle term, we have 2x square minus 2x minus x plus 1. From first two factors, take 2x common, we are left with x minus 1. And from these two minus 1 common, we are left with x minus 1. Both are same, that is, we are going on the right way. Here, take x minus 1 common, we are left with 2x minus 1. This is the divisor. That means it represents the two zeros that are given to us. And here it represents the remaining two zeros that we are to find out. We have to find out. The remaining zeros will be, this one product is equal to 0. That means either this one is equal to 0 or that one is equal to 0. X minus 1 is equal to 0 implies x is equal to 1. And 2x minus 1 is equal to 0 implies x is equal to 1 by 2. In this way, the remaining zeros are 1 and 1 by 2. In this way, we can find the remaining zeros of a polynomial if some zeros are given to us. Okay. Our next topic is we have to verify the relationship between the zeros and coefficient of a cubic polynomial. जैसे कि मैं लास्ट टाइम रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट किया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, ऐसे ही हमने क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन को फाइंड आउट करना, वेरीफाई करना है. ओके हमें पता है जनरल इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी प्रोवाइडिंग ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर. ओके अब यहाँ पर देखें इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3 है. हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में ही कि जब भी किसी पोलिनोमियल की डिग्री जितनी होती है उसके उतने ही जीरोज एग्जिस्ट करते हैं. अब यहाँ पर डिग्री कितनी है, 3 है, तो दैट मीन्स क्यूबिक पोलिनोमियल के कितने जीरोज एग्जिस्ट करेंगे, 3 जीरोज एग्जिस्ट करेंगे. ओके इन जनरल हम सिंबल जो जीरोज के लिए यूज़ करते हैं, लास्ट टाइम हमने क्वाड्रेटिक के लिए सिंबल यूज़ किए थे अल्फा एंड बीटा. अब यहाँ पर 3 जीरोज हैं तो हम वो सिंबल जीरोज के लिए क्या यूज़ करेंगे, अल्फा बीटा एंड इट इज़ गामा. लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी 3 जीरोज ऑफ cubic polynomial. Okay now the relationship between the alpha beta gamma and a b c d is, very first is sum of the zeros. Alpha plus beta plus gamma is equal to minus b upon a. b means coefficient of x square, a means coefficient of x cube. Okay that is equal to minus of coefficient of x square upon coefficient of x cube. Okay next is, जैसा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमारे पास 2 ही जीरोस थे तो 2 जीरोस का हमने क्या किया, या तो सम कंसिडर किया हमने या फिर हमने उनका प्रोडक्ट कंसिडर किया. ओके लेकिन यहाँ पर 3 जीरोज है, सम होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा. ओके अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट लास्ट होगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा होगा, लेकिन यहाँ पर 2 का प्रोडक्ट भी तो आ सकता है. तो यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इज सम of the zeros of cubic polynomial taking 2 at a time. Sum of the zeros of cubic polynomial taking 2 at a time, that means alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha. तो ये क्या होगा, c upon a. c is here, that is equal to coefficient of x. a is here, coefficient of x cube. And next क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए. माइनस डी इज हेयर कॉन्स्टेंट टर्म एंड ए इज हेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. ओके हेयर यू कैन लर्न इट बाय सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी अपॉन ए विद नेगेटिव साइन. Alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha is equal to, next is c upon a with positive sign. Alternate positive negative sign, very first negative then positive then negative. Product of the zeros are alpha into beta into gamma is equal to minus d upon a. Okay here the question is we have to verify, we have to
In this list we have a question. If the polynomial p of x is 2x cube plus x square minus 5x plus 2 and its three zeros are, that means here alpha is equal to 1 by 2, beta is equal to 1 and gamma is equal to minus 2. We have to verify the relationship between the alpha, beta, gamma and a, b, c, d. Okay. When we compare this p of x with general polynomial, then we get here the value of a is 2. A means coefficient of x cube. The value of b is here, the coefficient of x square is 1. And c means the coefficient of x. The coefficient of x in this polynomial is minus 5. And d means the constant term in this polynomial, constant term is 2. We have to verify the relationship. Very first we know that the first relation is sum of the zeros is equal to minus b upon a. Alpha means 1 by 2. Beta is here 1. Gamma is here minus 2. Is equal to minus b is here 1 and a is here 2. ओके अब हमें प्रूव करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगी. टू प्रूव इट 1 by 2 plus 1 is 3 by 2 plus minus minus 2. Write it as it is. 3 by 2 minus 2, take LCM. 3 minus 4 is equal to minus 1 by 2. That means here minus 1 by 2 is equal to minus 1 by 2. First relation हो गया verify. And the second relation is product of the zeros taking 2 at a time. Alpha into beta, beta into gamma plus gamma into alpha is equal to c upon a. Alpha into beta 1 by 2 into 1 is 1 by 2. Beta into gamma 1 into minus 2 is minus 2. Gamma into alpha is minus 1 is equal to c. C in this question is minus 5. Okay. A is here 1. We have here 1 by 2 minus 2 minus 1. 1 by 2 minus 3. Here take LCM. LCM is here 2. 1 minus 6 is equal to minus 5 by 2 here. Write 2 because the value of A is here 2. Is equal to minus 5 by 2. Minus 5 by 2 is equal to minus 5 by 2. Here we have left hand side is equal to right hand side. And the last relation is product of the zeros. Alpha into beta into gamma is equal to minus d upon A. Put the value of alpha, beta, gamma, d and A. Here we have alpha is 1 by 2. Beta is 1, gamma is here minus 2, minus d, d is here 2, a is here 2. Okay, 2 cancelled with 2, we have minus 1. This one cancelled with this one, we have minus 1. Here we have left hand side is equal to right hand side. Hence, it verifies the relationship between the zeros and coefficient of this polynomial. Next question is we have to find the cubic polynomial with the sum of the product of its two zeros taking 2 at a time and the product of its zeros as 2, minus 7 and minus 14. इस बार हमें zeros का sum of product taking 2 at a time, product of zeros हमें दे रखा है, हमें उस cubic polynomial को find out करना है. We have given here alpha plus beta plus, let the cubic polynomial is ax cube plus bx square plus cx plus d and let alpha, beta, gamma be its three zeros. And we are given here alpha plus beta plus gamma is 2. Sum is 2. And sum of the product of its zeros taking 2 at a time is minus 7 and product of the zeros is minus 14. We have to find the cubic polynomial. That means we have to find the value of a, b, c and d. Okay, we know that sum of the zeros is equal to minus b upon a. Sum of the product of the zero taking 2 at a time is equal to c upon a and the product of the zeros is equal to minus d upon a. Minus b upon a is equal to 2. This implies b upon a is equal to minus 2. We can write minus 2 as minus 2 by 1. Similarly, next c upon a is here minus 7. We can write it as minus 7 upon 1. And minus d by a is equal to minus 14. When minus cancelled with minus, we have d upon a is equal to 14. And we can write 14 as 14 by 1. When we will compare the coefficients, we have here see a is in denominator. So the value of a should be the same in 3 ratios. Here we have a is equal to 1, a is equal to 1, a is equal to 1. This implies we can take overall a is equal to 1 and b is here minus 2
corresponding C is here -7 and D is here 14. We now find the value of, we have the value of A, B, C and D. Substitute the values of these values in cubic polynomial, then the required cubic polynomial is k times of ax cube 1 into x cube, bx square minus 2x square plus cx यानी minus 7x and plus d, that means 14. This is the required cubic polynomial. Next question is, if the zeros of the polynomials are a minus b, a plus b, we have to find the values of a and b. Here let it say p of x is equal to x cube minus 3x square plus x plus 1. Its degree is 3, its 3 zeros exist and its 3 zeros are given to us. These are a minus b, that means alpha is here a minus b, beta is here a and gamma is here a plus b. We have to find the value of a and b. We know that sum of the zeros alpha plus beta plus gamma क्या होता है, ये माइनस बी अपॉन ए, या कह सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. The value of alpha is in this equation a minus b, the value of beta is a and the value of gamma is a plus b. That is equal to minus coefficient of x square. In this equation the coefficient of x square is minus 3, take it in bracket, upon coefficient of x cube is here 1. Now we have a minus b plus a minus b minus minus plus 3. This, it is plus sign, it is a plus sign. Now minus b cancel out with plus b, we are left with 3a is equal to 3. This implies a is equal to 1. Now we have find the value of a. Next step is to find the value of b. To find the value of b, we can here apply the third relation of the zeros and the coefficient, that is product of the zeros is equal to minus of d upon a, that means minus of constant term upon coefficient of x cube. Okay, alpha into beta into gamma, that means the value of alpha is in this equation a minus b, beta is here a and gamma is here a plus b, is equal to minus constant term in this equation is 1 and the coefficient of x cube is here 1. Okay, we have already find the value of a is here 1. Put the value of a in this question, we have 1 minus b, 1 plus b is equal to minus 1. Here it is a minus b, it is a plus b. Apply the formula of this one, a minus b plus b is a square minus b square is equal to minus 1. This implies here 1 minus b square is equal to minus 1. Take b square on the right hand side, we have, and it minus 1 to the left hand side, we have 2 is equal to b square. Here b square is equal to 2. This implies b is equal to plus minus root 2. ओके, दैट मीन्स बी की हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज आई हैं, एक रूट 2 है और एक हमारे पास क्या आई है माइनस रूट 2. इन